Hello, dear friends. Today, in this lecture, we are going to learn about a very important topic, that is articles. Articles is very important and a basic part in grammar. So, we need to learn this part in detail to be an expert of grammar. This part helps you a lot in your overall development of English. It is not that articles are asked in exam only for 1 or 2 months, but they are very important in your overall appreciation of your writing. Because if you use any article wrongly in letter, report, in story, you are going to lose your marks, because the examiner judges that if your articles are not good, your grammar is not good. So we need to prepare them in detail. Articles are very useful and they help a lot in the complete learning of grammar. So you know that there are 3 articles, a, and the. And these 3 articles are further divided into 2 groups, definite, indefinite, ये 2 type है. इसमें से the is called as a definite article and a and they are called as indefinite articles. In this video, we are going to learn in detail about the indefinite articles a and an. तो इसके बारे में हमको इस लेक्चर में सीखना है. So, before going, we need to learn some important things, basic things about these articles. Articles are closely associated with nouns. Their usage is based on the noun which is used. ऐसे कह सकते हैं कि they are used for nouns. अगर सेंटेंस में नाउन है तो सेंटेंस में आर्टिकल आएगा. No noun, no article. This is simple thing. So, if there is any article in a sentence, be sure that a noun is somewhere there. अगर कहीं आगे noun नहीं है, तो article कहीं पे भी नहीं आएगा. Be all the time this thing in mind. Again, articles are determiners. Determiners, they are used to give more information about nouns. बहुत सारे determiners है, and articles are one of them. Now, the use of article depends on different things. Means it depends on the type of noun. Type means what kind of noun is there, whether it is countable, uncountable, personal, possessive, personal, or what kind of noun is used. That is common noun, proper noun. इसके ऊपर इसका यूज पूरी तरह से डिपेंड होता है. ये सब चीजें हमको ध्यान में रखनी होती है जब कभी भी आपको कोई सेंटेंस में आर्टिकल यूज करना होता है. तो इसी को लेकर हम आज डिटेल में सीखने वाले हैं. लेट्स लर्न अबाउट द इनडेफिनिट आर्टिकल्स फर्स्ट. तो इस इनडेफिनिट आर्टिकल में सबसे पहले हम देखने वाले हैं a. a and an both have most of the qualities common in them. जैसे कि a का यूज कब करते हैं? a is used before countable nouns. The first quality that it has. ये सिर्फ countable noun के पहले यूज किया जाता है. Like there are different countable nouns around you. जैसे pen है, book है, bag है, chair है. All these are countable nouns. You can count them. 1, 2, 3, 4 उनके पहले लगा सकते हैं. 1 book, 2 books, 1 pen, 2 pens, 1 car, 2 cars. Like this you can call. तो इसको हम कहते हैं countable noun. तो a से countable noun के पहले ही यूज होता है. Now this statement exactly means that a and an, both of them, they cannot be used before uncountable nouns. So you must know about uncountable nouns. Now there are so many misconceptions that students have about uncountable nouns. Like uncountable noun, जिसको काउंट नहीं कर सकते, 1, 2 काउंट नहीं कर सकते. जैसे water, you cannot count water. 1 water, 2 water, ऐसा बोल नहीं सकते. हाँ, you can count them by using units, 1 liter, 2 liters. बट ऐसे सिचुएशन में हम लिटर्स काउंट कर रहे हैं, वाटर काउंट नहीं कर रहे हैं, और वाटर ऑटोमेटिकली काउंट हो जा रहा है उसके साथ, और उसको काउंट नहीं कर सकते. यही रीजन है जिसकी वजह से उसके लिए हमने यूनिट यूज किया है. तो वाटर काउंट नहीं कर सकते, शुगर काउंट नहीं कर सकते. यू कैन से, हम कह तो सकते हैं शुगर, एक शुगर, एक्चुअली दैट इज अ शुगर क्यूब. वो क्यूब हो गया, वो शुगर नहीं हुआ. ओके, तो यू कैन काउंट शुगर का क्यूब्स, बट यू कैन नॉट काउंट शुगर. दैट्स व्हाई वी यूज द यूनिट ऑफ किलोग्राम फॉर इट. तो ये अनकाउंटेबल है. मटेरियल नाउन्स जो होते हैं ना, अनकाउंटेबल होते हैं मोस्टली. सो ए इज यूज्ड ओनली फॉर काउंटेबल नाउन. एक और मिसकंसेप्शन इसमें क्लियर करना चाहता हूं मैं, दैट इज so many people consider stars are uncountable, क्योंकि ऐसे कहा जाता है ना, अनगिनत सितारे हैं. अनगिनत मतलब
they are in such a large number that it is impossible to count them. But actually we can start counting them. उनका काउंटिंग शुरू कर सकते हैं. Like 1 star, 2 stars. अगर स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते तो 5 स्टार चॉकलेट नहीं होता, 5 स्टार होटल्स नहीं होते, राइट? तो स्टार्स काउंटेबल है. स्टार्स की काउंटिंग हम शुरू कर सकते हैं. डोंट थिंक अबाउट एंडिंग. अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं उसके बारे में. काउंटेबल अनकाउंटेबल का कंसेप्ट आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. दैट इज द नाउन्स व्हिच कैन बी प्लूरलाइज्ड. जिनका हम प्लूरल कर सकते हैं वो काउंटेबल है. कीप इन माइंड. जिसका प्लूरल कर सकते हैं, जैसे पेन पेन्स, बैग बैग्स, कार कार्स, ये काउंटेबल है. अब वाटर का प्लूरल नहीं कर सकते, आप शुगर का प्लूरल नहीं कर सकते, सॉल्ट का प्लूरल नहीं कर सकते, तो दैट आर अनकाउंटेबल नाउन्स. जिसको काउंट कर सकते वही प्लूरल होता है. एंड दिस इज सिंपल लॉजिक. प्लूरल अनेक वचन इसलिए है क्योंकि हम उसको काउंट कर पा रहे हैं. दैट इज सिंपल थिंग. कीप इन माइंड. स्टार्स आर countable, that's why we can plural it. Hair are also plural. Hair भी count कर सकते हैं. You don't think of counting all of them. मेरे काम में नहीं है कि सब कुछ count करते बैठे. But we can start counting them. You can try at home. But one exception hair has, that is, it cannot be pluralized. That is a grammatical rule. Hair का hairs नहीं बोल सकते. Okay? तो जैसे बाल का बाला नहीं बोल सकते. Like that. तो simple. You cannot change that into plural. That is an exception. But hair also are countable nouns. One hair, two hair ऐसा बोलना पड़ेगा. So uncountable noun के पहले a या and नहीं आता. Okay, that is the first thing. Countable nouns. Second thing, a is used only before singular noun, and that also has a reason. The reason is the meaning of a is one. इसका meaning होता है one, and that's why it is used only before a noun which is used in singular form. You can say one pen. So instead of one, we have used a pen. Okay. You can also say one pen. I met one man. I went to one village. ऐसे बोल सकते हैं. That is not wrong English, but that is considered as bad English. तो grammatically कोई उसको challenge नहीं कर सकता. But हाँ, it is not good to use it. That's why it is called as bad English. तो नाउन जो होता है, a is used before only singular noun. प्लूरल के पहले यूज नहीं कर सकते. सिंपल लॉजिक है. यू कैन नॉट से a pens because a means one pens बोल नहीं सकते. So these two are the basic things, and these both are applicable for and as well. Now it is used before countable singular noun beginning with a consonant sound. consonant sound से शुरू होना चाहिए. 26 letters है. Out of them 5 are vowels and rest are consonants. तो consonant के पहले इसको आप यूज कर सकते हैं. consonant sound से शुरू होने वाले noun के पहले इसको यूज कर सकते हैं. For example, you can use it with the following nouns like a bag, a car, a man, a song. All of them starts with consonant sound. Not need to go in much detail of them. Let's see about and. And is used first thing common countable noun. Second, it is used with singular noun, common चीज है. And beginning with a vowel sound. ये तीन qualities होने चाहिए. Means the noun which starts with a, e, i, o, u. इसके साथ हम यूज करते हैं and. An apple, an egg, an orange, an umbrella. These are some examples of these. So you can see apple की तीनों quality है. Countable है, singular, beginning with a vowel sound है. Then egg में भी तीनों क्वालिटीज है, तो इनके साथ हम यूज करते हैं and. तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. So these are the common things that we have about a and n. अब हमको इसको लेके कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेना है which is very very important. One thing which is very important to learn before moving further. These things which are considered as an exception, इसको exception बोल के माना जाता है. तो लेकिन वो exception नहीं है. What I'm talking about is this concept. जैसे एक के बारे में हमने देखा countable singular noun के पहले उसको यूज करते हैं. Now you'll see that there are some nouns whose spelling starts with a vowel.
जिसकी स्पेलिंग वॉवेल से शुरू होती है, बट इट्स प्रोनाउंसिएशन बिगिंस विद अ कंसोनेंट साउंड। उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है। विद सच नाउन्स वी यूज ए। स्पेलिंग स्टार्ट्स विद अ vowel. See, a union. Here the spelling starts with a vowel, but its pronunciation starts with a consonant sound. U जो है, U एक vowel है, A-I-O-U में से एक है, right? अब इसका pronunciation अगर हम देखेंगे तो that starts with U, which is not a vowel. अब बोलेंगे कि ये क्या concept है? ये concept थोड़ा सा और अच्छे से हम समझ लेते हैं अपने अगले स्लाइड में। तो एक बात ध्यान में रखो, नाउन्स उनकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है वॉवेल से, बट प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट्स विद अ कंसोनेंट साउंड। विद सच नाउन्स वी यूज ए। हियर स्पेलिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज प्रोनाउंसिएशन। ओके, सो प्रोनाउंसिएशन हैज टू बी केप्ट इन माइंड। we'll see one more thing about and, then we'll move further. and के बारे में काउंटेबल सिंगुलर के पहले उसको यूज किया जाता है, you know it well. There are some nouns whose spelling starts with a consonant, but pronunciation starts with a vowel sound. With such nouns, we use and. तो spelling शुरू होता है consonant से, but pronunciation starts with a vowel sound. Pronunciation उसका vowel से शुरू होता है. There are some examples you can see. An honor. You see, in honor, the spelling starts with a consonant, but pronunciation starts with honor. और से इसका pronunciation शुरू होता है. तो with such nouns we use and. Same is the case of are. We'll come back to this slide after studying what I mean to say. Now, whether to use a or an, it is a matter of pronunciation. यहाँ पे नाउन का स्पेलिंग कभी ध्यान में नहीं रखा जाता, यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है नाउन का pronunciation. And in English these two are completely different terms, sound and spelling. What happens? There is a special science of pronunciation in English that is called as phonetics. आपने इसके बारे में पहले कभी सुना होगा, phonetics क्या होता है, क्या होता है, उसमें क्या सीखा जाता है. तो phonetics tells us how to pronounce a word. What happens in case of Marathi and Hindi? हम जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं, ओके, लेकिन इंग्लिश में वैसा नहीं होता. लाइक मराठी में हमने लिखा र, हिंदी में हमने लिखा र, हम उसको पढ़ते हैं र. बट when it comes to English, we write R, we read R. So R का ये वैल्यू, R का वैल्यू है R. So these two are completely different things, spelling and pronunciation. And according to grammar, whether to use a or an, it depends on the pronunciation. तो हमको pronunciation सीखना जरूरी है. So there are 26 letters in English, but actually when we talk about sounds, pronunciation, there are 44 sounds in English. ये writing का हो गया. जब हम spoken की बात करते हैं, there are 44 sounds. And in these 44 sounds, there are 12 vowels. Means when it comes to writing, only 5 vowels are there. And when it comes to speaking, pronunciation, there are 12 vowels. तो अगर हमको pronunciation क्या है ये समझना है, तो हमको ये 12 vowels क्या है ये पता होना चाहिए. ये 12 vowels कौन से है ये हमको पता होना चाहिए. तो उनको हमको एक बार अच्छे से सीखना पड़ेगा. Because A यूज करना कि and यूज करना, that depends on the knowledge of these 12 vowels. तो A, E, I, O, U आए या ना आए, अगर इनमें से कोई vowel आता है तो आपको and यूज करना पड़ेगा. So ये कौन से vowels है? They are मीन्स पहला शॉर्ट है, दूसरा लॉन्ग है. दो हो गए. देन आ शॉर्ट एंड लॉन्ग 4. देन ई short and long, e 6 are there. Then you have oo, this is short, this is long. Then we have a and a, 10 हो गए. And last two are a and a.
ऐसे टोटल 12 वॉवेल्स हैं ना, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, स्पेलिंग कुछ भी हो, कीप इन माइंड, स्पेलिंग कुछ भी हो, प्रोनाउंसिएशन इज इंपॉर्टेंट। ओके, और स्पेलिंग में कुछ भी आए, अगर प्रोनाउंसिएशन इनमें से किसी एक साउंड से होता है तो आपको बिना सोचे समझे एंड यूज करना है। ओके, व्हाटएवर इज द स्पेलिंग, pronunciation matters. Pronunciation is very important. So, whatever is the spelling, don't think about that. Think about the pronunciation. अगर इसमें से कुछ होता है तो you have to use and, और spelling कुछ भी हो, if the pronunciation doesn't start with any of these, you have to use a. That is simple. Okay. So, if you go back to our earlier slide, you'll know that I have used a with union. U is a vowel in writing, but when I say U, this is not a vowel because इसमें य आया. European, there are two vowels, but in pronunciation it starts with U. Same is case of uniform. यहाँ पे देखेंगे one, O is a vowel, but उसके पहले हम यूज कर रहे हैं a because pronunciation starts with W. Let's come to this side. Honor starts with H, but pronunciation starts with O. Same case is there. MP में भी वैसा ही है. M we write A. अपना 11th vowel देखा था हमने. Same MLA. यहाँ पे same thing is there. Servant noun है, but the article agrees with the nearest word. So honest है, इसलिए M यूज किया जाता है. तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है. So if you know these vowels in pronunciation, you can easily use a or an. About the we are going to learn in our next video. Thank you.